Hello everyone, this is Professor Sachin Jain and I'm going to discuss the NEET 2022 chemistry solutions. So if I talk about the overall analysis of the paper, the overall analysis of the paper was the chemistry section was moderate. And if I talk about the split up of the questions, inorganic chemistry was the king of this year's NEET 2022 chemistry section. 18 questions came from inorganic, 17 questions came from physical, and organic chemistry was pretty comparatively low, 15 questions. So the overall number of questions comes out to be 50. And most of the questions were NCERT based. So I can say many of the questions were factual and directly asked as per the NCERT line. So let's start with the 2022 chemistry solutions. The first question from Ionic equilibrium, the pH of the solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid. So if we have a look at the question, we are talking about a solution containing a salt of a weak acid with a strong base along with a weak acid. So यहाँ से clear हो जाता है that this particular solution will form an acidic buffer. And the moment we understand that it's an acidic buffer, we have to just apply the Hazelbach-Henderson equation for the pH. And the equation is pH is equal to pKa plus log to the base 10 concentration of the salt upon the concentration of the acid. So the pKa value is already given of the weak acid, which is equal to 4.57. pH of the buffer solution does not depend on the dilution. Anyways, the volume here was same, but even if the volume was not same, doesn't have mattered. We have to just apply the molarity values. So salt का जो molarity है 0.1 10⁻⁻1 है, acid का molarity 0.01 10⁻²2 है, ये हो जाएगा 10 log 10 is 1, add up 1 to 4.57 and the answer you get is 5.57. So this was a comparatively simpler question, straightforward from Ionic equilibrium buffer solutions. Which one is not correct? Now, in this year's NEET paper, almost 20 questions out of 50 questions were based on not correct or incorrect. So, which one is not correct? Mathematical equation for Dalton's law of partial pressure. So Dalton's law क्या बोलता है that if we have different solutions, then the total pressure of the solution is equal to sum of their partial pressures. So the first equation is Pi equal to Xi into Pi naught. Xi is the mole fraction of ith gas in the gaseous mixture and Pi naught is the pressure of ith gas in pure state. Now this is basically the Raoult's law. It is not Dalton's law, it is Raoult's law. So Raoult's law अगर है मतलब यही not correct expression हो गया, बाकी तीनों expression obviously Dalton's law को relate करना चाहिए. Let's have a look at the expressions. So P is equal to P1 plus P2 plus P3. Obviously the total pressure is equal to the sum of the partial pressure. It's a correct statement. And each partial pressure assuming the ideal gas law would be related as nRT upon V. So this is also correct. And Pi equal to Xi into P. Matlab, the partial pressure is the total pressure multiplied by the mole fraction. So first and fourth में अगर देखोगे तो here we have the pressure of the pure state. और यहाँ पे हम pure state की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे mole fraction multiplied by the P, which is obviously the total pressure. जो already question में दिया है, P is total pressure of the gaseous mixture. So first expression is Raoult's law, which is not the expression for Dalton's law, and the answer is 1. Next, the incorrect statement regarding enzymes. Incorrect statement. Once again, incorrect statement. So straightforward biomolecules का question है. Enzymes are very specific for a particular reaction and substrate. Yes, they are highly specific biocatalyst. So next में ही दिया है biocatalyst, ये भी correct है. Like chemical catalyst, enzymes reduce the activation energy. Catalyst का काम क्या है? To speed up the reaction by decreasing the activation energy. ये भी correct है.
Enzymes are polysaccharides. Wrong. Enzymes proteins होते हैं, and that is why the correct answer, meaning the incorrect statement जो पूछा है, is option 4. Match the column. बहुत सारे question match the column के related भी थे. So we have the alkali metal or their hydroxides to be matched with their corresponding uses. So lithium is used in electrochemical cells. Sodium is used as a coolant in fast breeder reactors. KOH is used for absorbing carbon dioxide, and cesium is photoelectric cell. अगर आपको इनमें से एक भी आता होता then you would have correctly marked, because cesium with photoelectric cell तो पता ही होगा, एक ही ऑप्शन उसको पॉइंट कर रहा है, and that is option number 1. So the answer is directly answer 1. Next, primary aliphatic amines react with nitrous acid to give unstable diazonium salt. Yes, because when we have a primary amine reacting with nitrous acid, which is HONO, HON double bond O, in the acidic medium, it forms the alkyl diazonium salt, which are highly unstable intermediates, जिसको immediately hydrolyze करने पर in the acidic medium, we get an alcohol with the liberation of N2 gas along with the HCl. So basically the alcohol is the final product and the intermediate alkyl diazonium salts are unstable. So the first statement which talks about the primary aliphatic amines to give the unstable diazonium salt is correct. Primary aromatic amines react with nitrous acid to form diazonium salts which are stable even above 300 Kelvin. अब ये partially correct है because aromatic diazonium salts stable तो होते हैं, लेकिन it's in the range of 0 to 5 degrees Celsius and not 300 Kelvin. तो ये statement incorrect है, यानी statement 1 correct है but statement 2 incorrect है. Answer is 4. Because if we talk about the aromatic amine, which is aniline, reacting with nitrous acid in the acidic medium, and the reaction is carried out in the range of temperature 0 to 5 degrees Celsius, which is about 273 to 278 Kelvin, we get ArN2 plus and Cl minus. So this particular structure is stabilized by resonance because we have a benzene ring bonded with N triple bond N plus and Cl minus. So ये resonance stabilized है, इसीलिए stable तो है, लेकिन in the range of temperature 273 to 278 Kelvin. Partially correct statement था, इसीलिए यहाँ पर answer will be 4. Next, which of the following is suitable to synthesize chlorobenzene? First में है हमारे पास aniline with HCl heating. Aniline और HCl simply एक acid base reaction करेगा, which will give you the anilinium chloride NH3 plus and Cl minus. So obviously ये chlorobenzene नहीं बनाएगा. Benzene with chlorine anhydrous FeCl3. Obviously this is one of the Shan reaction wherein benzene will be chlorinated in the presence of anhydrous AlCl3, where AlCl3 will break down chlorine heterolytically into plus and minus. So Cl plus will act as an electrophile and attack the electron-rich benzene and will kick out the H to form the chlorobenzene and HCl. It follows the electrophilic substitution reaction. So as I always say, benzene undergoes ESR reactions and follows the benzene undergoes Shan reaction and follows the ESR mechanism. So answer to option 2 है. दूसरा phenol with nano 2 HCl copper chloride. ये phenol नहीं aniline होना चाहिए and this would have been the Sandmeyer's reaction, तो ये भी ruled out है. और last में benzene with HCl will obviously not have any reaction, तो ये भी ruled out. Answer is 2. Identify once again the incorrect statement from the following. Lithium is the strongest reducing agent among the alkali metals. Fact है, NCERT का correct statement है. Alkali metals react with water to form their hydroxides. Yes, alkali metal will react with the water to form their hydroxides with the liberation of hydrogen gas.
The oxidation number of K in KO2 is +4. This is absolutely incorrect. तो आंसर अपना 3 है, because KO2 is famously potassium का superoxide which will break down to form K plus and O2 negative. And obviously K has a fixed oxidation state of +1, +4, तो उसका कभी हो ही नहीं सकता. मतलब even if you don't know about the other three option, clear answer था option third. And ionization enthalpy of alkali metals decreases from top to bottom in the group, a simple trend from top to bottom. Which compound amongst the following is not an aromatic compound? पहला वाला आंसर है, because this carbon is sp3, so it is non-planar, non-aromatic. Next है अपना cyclopentadienyl anion, which will have 6 electrons. As per the Huckel's rule, it will be aromatic. Next is the famous tropylium ion, which has 7 resonating structures, and with that it is aromatic and highly stable. And उसके बाद है cyclopropylium cation, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ aromatic है as per the Huckel's rule. Tropylium will have 6 electrons. So बहुत simple question from the aromatic hydrocarbons. Next is from electrochemistry. At 298 Kelvin, the standard electrode potentials. अगर आप देखोगे तो these are all the reduction potentials from +2 to 0. And on the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. Again, negative पूछा है, cannot occur. अब इसके लिए simple सा चीज मैंने बताया है. With respect to SHE, arrange the electrodes. तो सबसे पहले आएगा silver, उसके नीचे आएगा copper, SHE के नीचे आएगा iron, and उसके बाद आएगा zinc. If you have a look at the values, it's 0.34 in volts. Then copper is, silver is 0.8 volts, copper is 0.34 volts, zinc का है minus 0.76 and minus 0.44. Now ये values के बिना भी मैंने आपको sequence दिया हुआ है याद रखने के लिए, so you can clearly remember AC and FCZNA, तो उसके हिसाब से आप अरेंज डायरेक्टली कर सकते थे. अब सिंपल यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सोचना है. द रूल ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द मेटल वाज लोअर डिस्प्लेसेस अपर. तो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट रिएक्शन चेक वेदर द सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर. Can silver displace copper? No. Lower has to displace upper because ऊपर वाला reduction करेगा, नीचे वाला oxidation करेगा. तो not correct यानी cannot occur, option 1 ही होगा. बाद में देखो तो zinc can displace copper, yes. Fe can displace copper, yes. And zinc can displace iron, yes. बाकी सब correct है, बाकी सब occur होंगे. So simple question from electrochemistry. Given below are two statements. The acidic strength of monosubstituted nitrophenol is higher than phenol because of electron withdrawing nitro group. Absolutely correct. Because अगर हम phenol पे या कोई भी acid में electron withdrawing group लगा दे, चाहे ortho पे, meta पे या para पे, we will have the acidic strength greater than its previous parent compound. तो ये absolutely correct statement है. Orthonitrophenol, metanitrophenol, and paranitrophenol will have the same acidic strength as they have one nitro group attached to the phenolic ring. Absolutely incorrect. ये answer, ये statement incorrect है. तो answer तो आ गया. Statement 1 correct है and statement 2 incorrect है. Option 4. Now let's understand the reason to this. We have a benzene with a phenol and NO2 at the ortho. Then we have the metanitrophenol and we have the paranitrophenol. So इसमें we have to understand the substituent effect at different position. So if I talk about the effect, then at the ortho position we will have minus R and minus I. Meta पे resonance लिखना गुनाह है तो minus I, और para पे minus R और minus I. But ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में H और O के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा के कंपैरिजन में कम हो जाती है. सो पैरा बिकम्स मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड देन मेटा. तो देयर इज अ डिफरेंस इन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल्स. दे आर नॉट सेम and that's why the second statement was incorrect. So the answer is 4.
Next, which of the following statement is again not correct about diborane? हो गया नीट वालों को? Not correct, not correct. बहुत नेगेटिव पूछा है. Both the boron atoms are sp2 hybridized. Now diborane के structure में we have the two boron atoms linked to 4 hydrogen atoms in the terminal plane, मतलब in the same plane. तो ये HT लिखते हैं. And then boron sp3 hybridized होता है जिसका एक sp3 hybrid orbital और एक vacant orbital हाइड्रोजन के साथ बनाना बॉन्ड्स बनाता है इस तरह से. So these are called three centered two electron bonds. These are also the three centered two electron bonds. और ये अपने नॉर्मल बॉन्ड्स होते हैं तो टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होता है. एंड द बोरॉन हियर अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो पहला ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आंसर तो फर्स्ट है. बाकी देखो, देयर आर टू थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एज पर द स्ट्रक्चर. यस, फोर टर्मिनल BH bonds and two center two electron bonds. Yes, as I have already discussed. And the four terminal hydrogen atoms and the boron atoms lie in one plane. ये तीनों ही correct statements है. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is reason. So in a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral even if few of its cations are missing from its unit cell. ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज कोई भी डिफेक्ट हो, चाहे पॉइंट डिफेक्ट हो या लाइन डिफेक्ट हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है. आफ्टर द डिफेक्ट द स्पीशीज द आयोनिक सॉलिड रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो एज अ जनरल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, करेक्ट है. इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट, जिसको हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं, arises due to dislocation of the cation from its lattice site to the interstitial site, maintaining overall electrical neutrality. ये भी करेक्ट है. लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. तो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड. From the solid state, a simple factual question. Again, statement wale questions. The boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons of comparable molecular masses. Absolutely correct. Because of weak molecular weak molecular association in aldehyde ketones due to the dipole-dipole interaction. अब यहाँ पर एक कैच है. अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. उसके बाद आता है डाइपोल डाइपोल, जिसको मैं डीपीडीपी अट्रैक्शंस बोलता हूं. एंड उसके बाद आता है वेंडर वॉल्स, व्हिच आर द वीकेस्ट फोर्सेस. तो हाइड्रोकार्बन से अल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो है, लेकिन इट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन अल्डिहाइड कीटोन्स ड्यू टू द डीपीडीपी इंटरेक्शन. तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत होगा. And the boiling point of aldehydes and ketones are lower than alcohols of similar molecular masses due to the absence of hydrogen bonding. Yes, aldehyde ketones जो होते हैं उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होने की वजह से पोलर होता है एंड डीपीडीपी अट्रैक्शन. बट अल्कोहल्स में OH होता है जिसकी वजह से H बॉन्डिंग. तो अल्कोहल्स में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्डिहाइड कीटोन्स में कम होगा, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होने की वजह से द रिलेशन इज ट्रू, हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. अच्छा क्वेश्चन फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज लेबल्ड एज अगेन असर्शन और रीजन के ऊपर है. ICl is more reactive than I2. Yes, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स पोलर होने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड ICl बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड. अगर ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके पोलैरिटी की वजह से इसका बॉन्ड वीकर हो जाता है, मतलब ये करेक्ट है. और दोनों का आपस में रिलेशन भी है. तो both A and R are correct and R is the correct explanation of A. So answer is option 2 from P block elements. Match the column from organic chemistry, product formed and reaction of carbonyl with. तो साइनोहाइड्रिन बनने के लिए कार्बोनाइल should react with HCN
एसिटल के लिए अल्कोहल, शिफ्स बेस के लिए प्राइमरी अमाइन, ऑक्साइम के लिए NH2OH which is हाइड्रोक्सिलामीन। तो साइनोहाइड्रीन का फोर्थ, ए का फोर्थ, अरे वाह, एक ही डायरेक्ट आंसर मिल जाता है क्योंकि ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। सो मैच द कॉलम में अगर आपको एक भी चीज का आइडिया है then you can easily mark the question, mark the answer. नेक्स्ट अगेन द मैच द कॉलम, MgH2, ये तो सीधा सीधा आयोनिक है, यानी ए का फोर्थ एक में ही है, आंसर 2। वाह, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन। फ्रॉम दी हाइड्राइड्स, सो जर्मेनियम का हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होगा बिकॉज इट इज फ्रॉम द ग्रुप नंबर 14, कार्बन फैमिली का है। B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ा है। और HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, H बॉन्डिंग की वजह से। बट एक भी अगर आपको डायरेक्ट आता है तो द आंसर वाज सिंपल। Next is from F block elements. Gadolinium Gd has a low value of third ionization enthalpy. Now, gadolinium का electronic configuration बीच वाला है, तो it will be xenon 4f7 5d1 and 6s2. तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो वी विल हैव xenon 4f7 and 5d1. अब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद the 4f7 configuration becomes half filled, and half filled या completely filled configurations are highly stable due to very high exchange energy. So the third value of ionization enthalpy for gadolinium will be low due to high exchange enthalpy. Again, simple question from F block elements. Statement and okay, direct statements. In the coagulation of a negative sol, the flocculating power of the 3 given ions is in the order. Sol अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आयंस का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, तो फ्लॉक्यूलेशन पावर अल्यूमिनियम 3+ का ज्यादा, फिर बेरियम +2 एंड फिर Na+, करेक्ट स्टेटमेंट। And in the coagulation of a positive salt, the flocculation power of the 3 given salts is in the order. ये incorrect होगा because यहाँ पे negative charge देखना है और phosphate का सबसे ज्यादा होने की वजह से इसका flocculation power सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो statement 1 correct है, statement 2 incorrect है, तो आंसर होगा अपना option 4. Next again list 1 and list 2 मैच करना है। एंटासिड में सीधा सीधा सिमेटिडीन, अगर ए का थर्ड देख लिया तो ऑप्शन 1 और 4 तो रूल्ड आउट है। एंटीहिस्टामीन में सेल्डेन है, अनाल्जेसिक में मॉर्फिन है, और एंटी माइक्रोबियल्स में सेल्वर्सन है। सो ए का फोर्थ, उसके बाद एंटीहिस्टामीन, सॉरी ए का थर्ड, उसके बाद बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, आंसर होगा थर्ड वन। मतलब आगे देखो तो सी का 2, यस, अनाल्जेसिक मॉर्फिन। इन नार्कोटिक अनाल्जेसिक में मॉर्फिन, कोडाइन और हेरोइन आता है, एंड एंटीमाइक्रोबियल्स में सेल्वर्सन। सो फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, a direct straightforward question. Next, Gildal method for the estimation of nitrogen can be used, एक ही पॉजिटिव क्वेश्चन दिखा अब तक, can be used to estimate the amount of nitrogen in which of the following compounds. तो जिल्डाल मेथड जो है अजो कंपाउंड्स के लिए, नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए, और नाइट्रोजन अगर रिंग में रहेगा यानी पाइरिडीन के लिए काम नहीं करता है। अजो, नाइट्रो एंड पाइरिडीन और द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स डजंट वर्क फॉर जिल्डाल, सो एक के लिए काम करेगा एंड दैट इज एनिलीन, एंड नाइट्रोजन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द रिंग, आउटसाइड द रिंग इज ओके। अगेन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री POC का क्वेश्चन है ये। is a correct statement. Both diamond and graphite are used as dry lubricants. No, diamond lubricant की तरह काम नहीं करेगा, graphite करता है। Diamond and graphite have 2D structure, obviously not. ये भी पहला, दूसरा पॉजिटिव क्वेश्चन आई कैन से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। डायमंड इज कोवेलेंट एंड ग्रेफाइट इज आयोनिक, नहीं, दोनों कोवेलेंट होते हैं, तो आंसर ऑब्वियसली चौथा होगा। डायमंड sp3 एंड ग्रेफाइट इज sp2, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। IUPAC name of the complex. Complex को name करने के लिए just break down into the cation and anion. So if you just break down, the first part will have a plus sign, and the second Ag का +1, sino का -2, तो overall charge negative. So this will be named first, and this will be named later with the
silver metal ending with 8. So it should be diaqua, ये twice है, diaqua silver with a oxidation state 1, then dicyanoargentate with oxidation state again 1. Diaqua silver 1, dicyanidoargentate 1, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 1 ही होता है सिल्वर में. फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर ही आप 2 और 3 तो रूल आउट कर सकते थे, और फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है क्योंकि उसमें कटाइन पहले नहीं है. रूलिंग आउट से भी आंसर मिल जाएगा. Which of the following PV curve represents a max work done? मैक्स वर्क डन के लिए मैक्स एरिया अंडर द कर्व को चेक करना है. सीधा सीधा आपको दिखेगा आंसर ऑप्शन थर्ड है. ये साइक्लिक प्रोसेस है, वर्क डन 0 हो जाएगा. यहाँ पे वर्क डन कम होगा एज कंपेयर टू थर्ड. और आइसोथर्मल में विद द V constant W will be 0. In 1 molar solutions colligative property का एकदम simple question. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute, there is how much gram of the solvent? Molality का unit होता है mole per kg. तो अगर 0.5 मोल है तो ऑब्वियसली 500 ग्राम सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि 1 मोलल का मतलब होता है 1 मोल इन 1000 ग्राम, तो आधा मोल 500 ग्राम में होना चाहिए. क्या क्वेश्चन पूछा है, कोई तो लेवल रखो. आंसर इज थर्ड. Identify the incorrect statement from the following. The shapes of dxy, yz and zx orbitals are similar to each other, and x square minus y square and z square are similar to each other. अब ये काफी क्लोज है. xy, yz and zx ये डबल डम्बेल शेप होते हैं, and they are between the x and the y and the z and the x axis. But if we talk about dx square minus y square and dz square, they have the double dumbbell shape along the axis. But dz square की अगर हम बात करें, तो let's say this is my z axis, ये y और यहाँ पर ये x ले लेता हूँ. तो एक डम्बेल जो है along the z होगा, और बाकी xy प्लेन में एक डोनट शेप की तरह इस तरह से आता है. बट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लेट्स से ये मेरा x है, ये y है और ये z है, तो अलोंग द x ये और अलोंग द y ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, जो शेप्स इन दोनों का सेम नहीं है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका आंसर 1 ही होगा. बाकी ऑप्शन, all the 5 phi d orbitals are different in size when compared to the respective 4d orbital. n की वैल्यू चेंज होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा n रहेगा, तो उसका साइज भी बड़ा रहेगा. All the 5 4d orbital have shapes similar to the respective 3d orbital. Now shape तो double dumbbell along the 2 axis या on the 2 axis के हिसाब से ही रहेगा, उसमें n की वैल्यू भले ही चेंज हो, it doesn't matter. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हुआ. And in an atom, all the 5 3d orbitals are equal in energy. They are degenerated in the free state. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. Degenerate होते हैं फ्री स्टेट में जब तक किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है. Simple question from the D block elements. What mass of 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml 0.5 molar HCl solution according to the following equation? तो इक्वेशन आपके लिए देके रखा है. कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करता है to form the salt, water and the liberation of carbon dioxide. Now 95% pure calcium carbonate है, ये एक important point. तो सिंपल वे में क्या करेंगे, we have 50 ml 0.5 molar which is 25 millimoles. Now calcium carbonate and HCl are reacting in the ratio 1:2. तो इसका अगर 25 मिलीमोल है तो इसका 12.5 मिलीमोल होना चाहिए as per the stoichiometry. And we want to find the mass. So mass of calcium carbonate will be equal to 12.5 into 10⁻³ moles में आ गया into molar mass 100.
एंड ये हो जाएगा आपका 1.25 ग्राम्स। बट 95% प्योरिटी है, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट है वह 1.25 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 1.25 से ज्यादा है, तो आंसर इज 1.32 grams, because actual weight into 0.95 will be equal to 1.25। तो आप 1.25 को डिवाइड कर लो 0.95 से, आपको ये आंसर मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। Next, which amongst the following is incorrect statement? O2 plus is diamagnetic। अरे बाप रे, यही डायरेक्ट आपका आंसर है, बिकॉज एक सिंपल सा मेथड यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। दिस इज योर O2, then we have O2 plus, O2 plus 2 and O2 minus, O2 minus 2। O2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, तो ये डायमैग्नेटिक सॉरी पैरामैग्नेटिक होता है। एक लॉस या गेन किया तो भी पैरामैग्नेटिक, एक्सट्रीम्स वाले डायमैग्नेटिक होते हैं। तो O2 प्लस जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक नहीं। ठीक है, दूसरा अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर 2, दिस विल बी 2.5 and 3, दिस विल बी 1.5 and 1। आधे से घटाओ आधे से बढ़ाओ, ये सिंपल ट्रिक था। तो अगर आप देखोगे O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यस, O2 का 2, यस, O2 माइनस का 1.5, O2 माइनस 2 का 1, ये करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbitals। ये आप MO सीक्वेंस बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा। H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो H2 प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऑब्वियस बात है, करेक्ट है। तो दिस वाज फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, आंसर इज ऑप्शन 1। Next, RMgX plus CO2 in dry ether gives an intermediate Y, which on a hydrolysis gives an acid। तो आपको सिंपल इंटरमीडिएट को आइडेंटिफाई करना था। तो Grignard reagent would react with solid carbon dioxide, which has a polarity of delta plus and delta minus. And Grignard very importantly breaks down into minus and plus। तो माइनस अटैक करेगा प्लस को, प्लस अटैक करेगा माइनस को। So in the presence of dry ether जो Mg complex बनेगा वो पूछा है, and this will be RC double bond OMgX, जिसका आगे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H2O in H plus, so this will break down and we will get a carboxylic acid along with the byproduct MgX with OH। तो आपसे यहाँ पर पूछा था ये इंटरमीडिएट which will be RC double O MgX, which is option RC double O MgX, option 2। Organic chemistry, Grignard reagent related carboxylic acids का reaction। Next, from the electrochemistry, one more question. MnO4 negative plus 8H plus with gain of electron gives Mn2 plus and 4H2O। उसका यहाँ पर आप चेक करोगे तो Mn2 प्लस से +2 से +7 जा रहा है, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। And half O2 plus 2H plus 2E minus give H2O। O2 water plus 1.223 volts है। Will the permanganate ion liberate O2 from water in the presence of an acid? So the reaction has to be permanganate on the left in the acidic medium will react with water and will give Mn2 plus along with O2. Forget about this. So the Mn has to undergo reduction. Yeah. And the oxygen has to undergo the oxidation. So for this, we have the E naught of the cell equal to E naught of the cathode minus E naught of the anode। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है और रिडक्शन Mn का हो रहा है, we need to have MnO4 minus slash Mn plus 2 minus ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का हो रहा है, तो we need to have O2 and H2O। ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। So now for the reduction potential we need to take this positive
सो इट विल बी 1.510 माइनस ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही है तो 1.223। तो पॉजिटिव तो आ रहा है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी होगा एंड डिफरेंस इसका आएगा 0.287 वोल्ट। तो permanganate will liberate oxygen, correct है, yes, and the E naught of the cell will be positive 0.287. So the answer is option 2. एक ट्रिकी पार्ट था कि यहाँ पर जो E naught दिया है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था and we have to consider the reduction potential for the correct application of this formula. Next, the given graph is a representation of kinetics of a reaction. केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, y वर्सेस x एक कांस्टेंट लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस दिया है। तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, लेट्स एनालाइज वन बाय वन। जीरो ऑर्डर y इज रेट एंड x इज कंसंट्रेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर y इज रेट एंड x इज t हाफ। आपको सारे ग्राफ्स ध्यान होने चाहिए। तो इफ वी टॉक अबाउट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ग्राफ्स को सिंपल वे में समझने के लिए हमेशा इक्वेशन सोचो। जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू जीरो व्हिच इज इक्वल टू के। तो रेट विल बी अलाइन पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस एंड फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस टी हाफ, रेट वर्सेस टी हाफ। तो टी हाफ का रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन के है विच इज एनीवेज अ कांस्टेंट। तो ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना रेट ना रेट। तो दैट इज व्हाई द रेट विल बी अगेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टी हाफ। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व जीरो ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम, तो जीरो ऑर्डर के लिए वी हैव AT इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ आता है तो ये रूल आउट हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम अगेन जीरो ऑर्डर के लिए सेम चीज दिया है तो ऑप्शन 2 और 3 तो डायरेक्ट रूल आउट करोगे। एंड रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन जीरो ऑर्डर के लिए ठीक है, टी हाफ एंड कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जस्ट अ मिनट, रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ एंड concentration. Okay. Rate equal to K into concentration of A for a first order and K आपका आएगा 0.693 upon T half into A. तो फर्स्ट ऑर्डर में रेट और टी हाफ का रिलेशन कांस्टेंट नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट विल आल्सो बी रूल्ड आउट बिकॉज फोर्थ में हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर के बीच में half life is a constant and independent of the concentration. So sorry, the answer is option 4. Chemical kinetics ka graph based question. The incorrect statement regarding chirality is a racemic mixture shows zero optical rotation. Yes, a racemic mixture is a mixture of dextro and levo in equimolar proportion and it will be optically inactive, so it will show zero optical rotation. Again incorrect statement पूछा है तो पहला तो correct है। SN1 reaction yields 1:1 mixture of both enantiomers. Yes, ये भी correct है। Product obtained by SN2 reaction of haloalkane having chirality at the reactive site shows inversion. Yes, Walden's inversion 100% inversion बताता है। Enantiomers are superimposable mirror images of each other. No, they are non-superimposable mirror images of each other. यही incorrect statement और यही answer है from organic chemistry haloalkane chapter. IUPAC name of an element periodic table से 119 का IUPAC 1 के लिए अन होता है, वापस 1 के लिए अन होता है और 9 के लिए n होता है और IUM ऐड कर देना है। So unanium will be the IUPAC name. Answer is option 2. Polymers के related direct actual question, again negativity बरकरार, so we have to find when statement is not correct. Thermosetting polymers are reusable. नहीं, thermally एक बार set हो जाता है तो reuse नहीं कर सकते हैं। Bakelite is one example, तो thermosetting polymers are reusable is incorrect, ये आंसर है।
तो बाकी elastomers have polymer chains held together by weak intermolecular forces, तभी तो elasticity की property होगी। फाइबर्स में H बॉन्डिंग होने की वजह से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। यस, thermoplastic polymers are capable of softening and hardening on heating and cooling respectively। ये तो थर्मोप्लास्टिक की अद्भुत प्रॉपर्टी है, सो ये भी करेक्ट है। From the p block elements, the boiling point of the hydrides of group 16 elements increases in the order। अरे बाप रे, grave mistake मतलब grave incorrect statement है, because hydrides में water का boiling point exceptionally high होता है due to इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी तीनों में H पर मोलर मास H2T, H2SE और फिर सबसे कम H2S का होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास। अगर मोलर मास बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर का एक्सेप्शन होने की वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर। Again, from chemical bonding, which one will have maximum LP lone pair electron repulsion? तो इसमें मैं हमेशा आपको बोलता हूँ वेस्पर यूज करो। सो XeF2 में सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 जाएगा तो बचेगा 6 इलेक्ट्रॉन, which will correspond to 3 lone pairs। So 1, 2 and 3। उसके बाद ClF3 क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, 3 गया, बचा 2 लोन पेयर। IF5 में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 गया, बचा 1 लोन पेयर। SF4 में 6 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का और 4 गया तो बचा 1। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन वहां होगा जहां सबसे ज्यादा LPs होंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन 1। कमिंग टू सेक्शन बी, यहाँ पे एनी 10 आपको सॉल्व करने थे। So a correct selection would definitely be important over here। For a first order reaction A giving you products, initial concentration यानी A naught 0.1 है, which becomes 0.001 molar यानी AT after 5 minutes यानी टाइम दिया है। तो रेट कांस्टेंट इन मिनट इनवर्स यानी कोई कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। The rate constant is 2.303 upon T into log to the base 10 initial A naught upon AT। सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन 2.303 अपॉन टाइम 5 है into log to the base 10 A naught 10 raised to -1 और 10 raised to -3। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, बाहर आएगा 2। तो 2.303 into 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो जाएगा 2.3 into 4 अपॉन 10। 4 3 सा 12, 4 2 सा 8, तो 9.2 अपॉन 10, 0.92 के आसपास का आंसर। ऑप्शन 3 इज द आंसर। केमिकल काइनेटिक्स का बढ़िया सा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन। Which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating? Ketones react कर रहे हैं in the presence of base, ये है आपका aldol condensation। अब जब दो डिफरेंट अल्डिहाइड या कीटोन अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं तो 4 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, 2 सेल्फ के और 2 क्रॉस के। अब इसकी सिंपल शॉर्टकट को आप अप्लाई करो। डबल बॉन्ड तोड़ो, जहां पे ऑक्सीजन है वहां H2 जोड़ो, जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां ऑक्सीजन जोड़ो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, जैसे CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3 यानी ये पेंटेनोन 2 पेंटेनोन का स्ट्रक्चर है। तो ये वाला तो करेक्ट है, ये बनेगा। आपको वापस नेगेटिव पूछा है, नॉट फॉर्म। यहाँ पर भी, यहाँ जहां ऑक्सीजन है H2 और जहां नहीं है वहां पे O, ये आपका सिंगल ही है। तो दिस इज O। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो एसीटोन है, राइट हैंड साइड पे भी एसीटोन है। तो ये एसीटोन एसीटोन का सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, तो ये भी करेक्ट हुआ। यहाँ पर भी H2 लगा दो तो दिस इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये तो भैया पेंटेन 3 ओन बन गया, और यहाँ पर भी ये पेंटेन 3 ओन बन गया जो हमें नहीं चाहिए, ये नहीं बनेगा। आंसर 3 ही है। यहाँ पर H2 डाल दो, ये एसीटोन है,
यहाँ O डाल दो, ये पेंटेन 2 ON है, ये बनेगा और ये इसका क्रॉस अल्डोल प्रोडक्ट है। तो इससे ज्यादा बेटर शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। सिंपल डबल बॉन्ड तोड़ो, पानी जोड़ो, चेक वेदर दे आर द करेक्ट प्रोडक्ट्स और नॉट। Next, in the neutral or faintly alkaline medium, KMnO4 oxidizes iodide into iodate. ये तो डायरेक्ट अपना फैक्ट बेस्ड है, आयोडाइड से आयोडेट बनता है। एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन दिस रिएक्शन इज फ्रॉम, यहाँ पर आपका परमैंगनेट आयन MnO2 में बदलता है, MnO2 में बदलता है। तो द +7 ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज चेंजेस टू +4, और आपको मैंगनीज का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज बताना था। तो आंसर है 7 से 4 ऑप्शन 2, डी ब्लॉक का एक बहुत बढ़िया सा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट, कंपाउंड X ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक H2O, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस समझ में आता है, गिव्स फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल एज द प्रोडक्ट। इसमें सिंपल रिवर्स वे में करना है, तो ऑक्सीजन निकालो, डबल बॉन्ड जोड़ो। तो फॉर्मल्डिहाइड इज HCH डबल बॉन्ड O एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, पहले 2 मिथाइल प्रोपेनॉल बना देते हैं। ये हो गया आपका प्रोपेनॉल और ये 2 पे मिथाइल। सो व्हाट वी हैव इज C with H double bond O and an isopropyl group. So sorry, isopropyl group। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकालो दोनों तरफ से और डबल बॉन्ड को जोड़ो, तो आपको मिलेगा H2C डबल बॉन्ड CH एंड देन द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। बस इसका IUPAC नेम कर लो एंड यू हैव द रिएक्टेंट रेडी। So it will be 3-methyl but1-ene. That's the answer, option 2. Organic chemistry, hydrocarbons question. 3 oxygen giving you 2 ozone. Chemical equilibrium का question. For the above reaction at 298 Kelvin, Kc equilibrium constant is found to be 3 into 10 raised to minus 59. If the concentration of O2 at equilibrium is given, then the concentration of O3. अरे भैया straight forward formula based है, तो Kc क्या होगा, concentration of the products upon the concentration of reactant raised to the powers equal to the stoichiometric coefficient. तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 पूछा है, तो O3 का स्क्वायर जो है वो Kc को मल्टीप्लाई करना है O2 के क्यूब से। तो आपका Kc है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 59 और ये वैल्यू होगा 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मोलार। उसका क्यूब करोगे तो 4 4 16 4 64 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। तो पावर्स को साथ में ले लो, ये 12 हो जाएगा, ये 192 एंड 10 रेज टू माइनस 65 स्क्वायर है, तो आप इसको 19.2 करके 10 रेज टू माइनस 64 कर लो। तो स्क्वायर रूट लेने पर आपको मिलेगा यहाँ तो 10 रेज टू माइनस 32 का पावर एंड दिस विल बी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। सो समथिंग समथिंग 4 पॉइंट एंड 10 रेज टू माइनस 32, ऑप्शन 2 इज द आंसर। ज्यादा सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट द आंसर डायरेक्ट बाय दिस। Next, from the atomic structure, if the radius of second Bohr orbit of the helium plus is 105.8 picometer, what is the radius of third Bohr orbit of lithium 2 plus ion? The radius of the nth orbit is given by 0.53, 529 होता है, तो approx 0.53 into n square by z. तो आपको यहाँ पर radius of the third orbit of lithium plus 2 find करना है, तो let's check the ratio. And the given is radius of the second Bohr orbit helium plus ion. तो इसके लिए n square by z, n आपका 3 है तो 3 square, lithium का atomic number 3 है, और इसके लिए भी n square 2 square होगा और z आपका 2 है, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, 3 by 2 1.5 का रेशियो बचेगा। तो the radius of the third orbit for lithium plus 2 will be equal to 105.8, जो हीलियम का दिया है उसका 1.5 गुना, तो 155 के आसपास का आंसर आएगा एंड पिकोमीटर में आना चाहिए। पिकोमीटर में 155 के ऊपर आंसर 2 ही होगा, सो आंसर इज 2। The pollution due to oxides of sulfur gets enhanced due to the presence of. Now this is from environmental chemistry and this is NCERT fact based.
ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से पोल्यूशन एनहांस होने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत है. सो पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन एंड हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोकार्बन्स विल बी रूल्ड आउट. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए, बी एंड डी, ओनली ऑप्शन थर्ड. A 10-liter flask contains 64 gram of oxygen at 27 degrees Celsius. Assume O2 is behaving ideally. जैसे आइडियल बोला, प्रेशर वॉल्यूम दिया है, तो ऑब्वियसली आप PV इक्वल टू एनआरटी का सिंपल इक्वेशन डाल दो. अरे बाप रे, स्टेट्स ऑफ मैटर का एकदम सिंपल क्वेश्चन. तो प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क विल बी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो डिवाइड बाय 32, 2 मोल्स आएगा. आर का वैल्यू 8.31 इंटू 10⁻⁻2 है. टेम्परेचर 300 केल्विन में कन्वर्जन करना है और वॉल्यूम दिया हुआ है 10. तो ये तो निकल जाएगा डायरेक्टली. आपके पास बचा 8.31 इंटू 6, 8.31 इंटू 6, तो ये 6, ये 18, ये 49 और डिवाइड बाय 10 कर लो तो 4.9 का आंसर बचेगा. So it will be 4.9 के आसपास एटमॉस्फेयर. और बार में पूछा है तो बार या एटमॉस्फेयर, क्योंकि लीटर बार में दिया है तो बार में ही आंसर होगा 4.9, ऑप्शन 1. The correct IUPAC name of the following compound. So there are 3 functional groups, OH, chloro, bromo. Chloro, bromo का तो प्रायोरिटी सबसे कम, OH की प्रायोरिटी, तो नंबरिंग होगा राइट से 1 2 3 4 5 and 6. So we'll have 1 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल. अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी चेक करना है, ब्रोमो, क्लोरो, मिथाइल और हेक्सेन 3 ऑप्शन 2 इज द आंसर. Statement related organic chemistry haloalkanes. In Lucas test, primary, secondary and tertiary alcohols are distinguished on the basis of their reactivity with conc HCl and ZnCl2, which is known as Lucas reagent. Absolutely correct है. Lucas test हम primary, secondary, tertiary alcohols को differentiate करने के लिए use करते हैं. Primary alcohols are most reactive and immediately produce turbidity. Absolutely wrong. इसमें कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, तो प्राइमरी नहीं टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो इमीडिएट टर्बिडिटी बताते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑप्शन 4 इज द आंसर. Next, the order of energy absorbed which is responsible for the color of complexes. तो जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है वो डिपेंड करता है CFSE पे, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. और ये जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स. स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, जितना लिगेंड्स का स्ट्रेंथ ज्यादा, उतना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब होगी. तो En इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और C में सबसे ज्यादा है, फिर A में 2 है और फिर B में एक ही En है. एक्वा तो एनीवेज वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो C में सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब, फिर AB. कैप विल बी द आंसर, ऑप्शन 4 CAB. Copper crystallizes in FCC unit cell with the cell edge length of 3.608 into 10⁻⁻8 centimeter. Density of the copper is 8.92 gram per cm cube. Calculate the atomic mass of copper. Actually, atomic mass of copper 63.5 होता है. उसके बेसिस पे आप डायरेक्टली अगर आंसर करना चाहो तो आंसर सेकेंड आ जाएगा. सॉल्व करना है तो जैसे मैंने फॉर्मूला दिया है, डेंसिटी इज 10 Zm by a cube into 6. तो इससे आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो. डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a क्यूब इंटू 6 अपॉन 10 इंटू z. सब्स्टिट्यूट कर लो, आपको मिल जाएगा मोलर मास. सॉलिड स्टेट का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. फाइंड द EMF. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फेवरेट रहा है फिजिकल केमिस्ट्री का बिकॉज तीसरा क्वेश्चन आया है फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेम. Find the EMF of the cell in which the following reaction takes place at 298 Kelvin. Nernst equation related है. यहाँ पे एक करेक्शन है बच्चों, it's 1.05 वोल्ट और आंसर में भी गड़बड़ है. Nernst equation के हिसाब से E is equal to E naught, obviously E of the cell is equal to E naught of the cell minus 0.059 upon N into log to the base 10
प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू दियर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ई नॉट तो आपको 1.05 देना चाहिए था, ये करेक्शन है। 0.059 ऑलरेडी वैल्यू दी है, नहीं भी दिया होता तो हम यही लेते हैं। 2 because nickel is changing from 0 to +2 and Ag is changing from +1 to 0, लेकिन 2 moles है। तो anyways change in oxidation, change in electron is 2 and log to the base 10. Concentration of the product is 10 raised to -3 raised to 1 upon concentration of the reactant is again 10 raised to -3, लेकिन उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10 raised to -6, ये हो जाएगा 10 raised to 3, बाहर आएगा 3, that's 1.05 minus 3/2 into 0.059, which is 1.05 minus 1.5 times 0.059. The 1.05 minus 59 into 15 कर लेते हैं, 59 सा 135, 65, 75, 85. So it's 0.0885. So 1.0500, 0.0885. तो ये हो जाएगा 5, 1, 6, 9 and 0, 0.9615, absolutely okay. So 0.9615 volt, but because of the correction over here, NTA should declare a bonus for this question. Match the list ores and composition. Hematite is Fe2O3, magnetite is Fe3O4, calamine is zinc का carbonate, kaolinite तो direct है। तो D का 4 अगर मैच कर लेते हो तो 3 ऑप्शन में है, A का थर्ड एक ही ऑप्शन में है तो A का थर्ड हेमेटाइट से मैच कर लो, और D का फोर्थ कॉम्बिनेशन, B का 1 एंड C का 2, आंसर इज थर्ड। मेटलर्जी का डायरेक्ट ओस रिलेटेड क्वेश्चन। देन द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, साइनो का LiLH4 से रिडक्शन। So first step में the reduction of the cyano gives you a primary amine, Mendius reduction बोलते हैं इसको, CH2NH2 आ जाएगा। फिर NaO2HCl will give you the ozonium salt, so you'll get CH2N2 plus and Cl minus, but ये aliphatic ozonium है, diazonium, जो कि unstable होगा। तो थर्ड स्टेप में जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो N2 रिलीज हो जाएगा, HCl निकलेगा and will get a benzyl alcohol. So this will be the final product. Answer is 1. So that completes the discussion of the NEET 2022 chemistry paper. I hope you have got the help from the paper solutions. Thank you.